We have to find electric field due to charged ring at a point on the axis. Given situation क्या है? हमने माना P is a point on the axis at a distance x from the center of a ring which has a radius a and has a charge density lambda per meter. Correct? Okay. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और चार्ज कहाँ पर है? तो आंसर है चार्ज तो सरकमफ्रेंस पर है और एक्सिस ऐसी है. कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो चार्ज उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? ये वाला चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में. ये वाला चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में, इस तरह से. ऐसे सब चार्जेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे. अब हमारे पास फॉर्मूला तो वही है पॉइंट चार्ज वाला, और पॉइंट चार्ज का हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? लैम्डा dl. dq चार्ज पॉइंट चार्ज हम क्या मानेंगे? यहाँ पर छोटी सी हमने लेंथ मानी dl. सो dq इज लैम्डा dl. इस लैम्डा dl के कारण यहाँ पर E ड्यू टू dl at top is equal to is dE, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. यहाँ पर q हमने कितना लेना है? dq और dq अपॉन r स्क्वायर. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस dE इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq को क्या लिखेंगे? लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर. व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? दिस इज द डायरेक्शन. नाउ इट इज रिजॉल्व्ड इन टू डायरेक्शंस. दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं. कौन कौन सी? अलोंग एंड नॉर्मल टू एक्सिस. अलोंग एक्सिस रिजॉल्व करने के लिए हमको कोई एंगल मान लेना चाहिए. इस एंगल को मान लेते हैं थीटा. तो अलोंग एक्सिस क्या हो गया? dE cos थीटा. ठीक है. नॉर्मल dE sin थीटा. ये यहां पर इसके हमने दो कंपोनेंट बना दिए. ये वन इज दिस इज विच वन? cos थीटा एंड वन इज दिस. This is sin theta, d cos theta, d sin theta. अच्छा, ये जो ऊपर dE बन रहा है ये किसके कारण है? इस dl के कारण. ये इसको लिख देते हैं a diametrically opposite dl also make dE such that dE cos theta is in the same direction of axis while dE sin theta is opposite. और ये
नीचे वाले dl ने ये वेक्टर बनाया, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, ये de cos थीटा और ये de sin थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? यहां पे कौन कैंसल हो गए? de sin थीटा कैंसल हो गया। देयरफॉर net electric field is equal to integration of dE और E is equal to integration of dE की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। ये अब इसमें कांस्टेंट्स देखिए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम इंप्रूव करते हैं। व्हाट इज दिस r? r is this distance, r is this distance। जैसे जैसे पॉइंट P आगे या पीछे होगा r की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन r को हम लोग गिवन वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। गिवन वैल्यूज क्या हैं? x और a। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस वी विल राइट एज, सी हियर, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और r स्क्वायर को हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? dl। ठीक है, ओके। dl का इंटीग्रेशन बताइए। ये dl 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 कितना हुआ? नो l। l तो हमने टर्म मानी नहीं। ये रेडियस कितना है? a रेडियस है, तो सरकमफ्रेंस कितनी हुई? यस, 2 पाई a। तो dl का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 2 पाई a। सो दिस इंटीग्रेशन dl वी विल राइट एज 2 पाई a। ये आ गया। ओ, एक चीज कहीं छूट गई है। कॉस थीटा कहां चला गया? हाँ, ये देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा कितना होगा? हम कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। यहां से हमने कॉस थीटा की वैल्यू रखी, थीटा, तो ये भी कितना हुआ? थीटा। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r। तो यहां पर हमने उसकी वैल्यू रख दी DE cos थीटा, और यहां पर हमने क्या लिखना है? cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो अब E ऐसा लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4
4 pi epsilon naught, correct, lambda, correct, upon a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट. उसके बाद cos थीटा, cos थीटा को क्या लिखना है, x अपॉन r, r को a और x में कन्वर्ट करिए, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये तो x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये क्या किसके बदले में आ गया, cos थीटा. ठीक है. उसके बाद कौन बचा, इंटीग्रल dl. अब जब हम इंटीग्रल dl करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 पाई a. समझ आया, 2 पाई a किसके लिए आया, इंटीग्रल dl, cos थीटा की वैल्यू x अपॉन दिस, और बाकी पहले आ चुका है सब ये. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. 2 पाई a टोटल सर्कल है, ठीक है, ये 2 पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो अब ये हमारा एक्सप्रेशन कितना होगा, लैम्डा ऊपर में लैम्डा इंटू a इंटू x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई कैंसल हो गया और यहां बचा 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा एक्सप्रेशन आया. ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए. सो हाँ, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आंसर है ऑल दीज कंपोनेंट्स, ये ऊपर, ये नीचे, ये सामने, पीछे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे. सो ऑन द एक्सिस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along the axis, that is the direction, okay, and this is the magnitude. तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला, E is equal to lambda a upon 2 epsilon naught into x upon x square plus a square to the power 3/2. At distance x on the ring. तो इसमें आप देखेंगे मेथड वही है, क्या, एक छोटा सा टुकड़ा dl लेना और वो इतना छोटा होता है कि हम उस पर पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन लगा देते हैं और फिर कंपोनेंट बना के जो कैंसिल हो गए, बाकी को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और इंटीग्रेशन लगा दिया. अब इसमें क्या ये फॉर्मूला वाकई ठीक है, देखिए इसमें हम दो सिचुएशन लेते हैं, स्पेशल केसेस. x इज मच लार्जर देन a, ये रिंग है और यहां पर हम ले रहे हैं, तो ये कौन है, x, और ये कौन है, a. अगर ऐसा केस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. इसमें लैम्डा पर मीटर इसका चार्ज डेंसिटी है. अगर इसका टोटल चार्ज Q है तो Q टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, लेंथ कितनी, 2 पाई a, डेंसिटी कितनी, लैम्डा. तो 2 पाई a लैम्डा किसके बराबर है, Q. व्हाट इज Q, टोटल चार्ज. लैम्डा क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, अगर ये x इज वेरी लार्जर कंपेयर टू a, then a can be neglected when addition with the x.
तो इस a को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अगर हमने इस a को नेग्लेक्ट कर दिया तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। कितनी आ गई, 3 में से एक इससे कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, एक्स स्क्वेयर। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, देन E इज इक्वल टू लैम्डा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब नीचे ये ऊपर वाला नहीं, क्यों, हाँ ये चीज याद रखिए, ये क्लास 11th में हमको पढ़ते हैं कि जब हम दो क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी लार्ज है और एक स्मॉल है, तो दोनों के एडिशन में स्मॉल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते। जैसे 1000 प्लस 0.1 कितना हुआ, 1000.1। 1000.1 और 1000 क्या इनमें कोई डिफरेंस है खास, नहीं, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ है। ठीक, दूसरा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 100, बहुत छोटा हो गया, तो क्या हम वहां 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई और डिवाइड में छोटी क्वांटिटी नेग्लेक्ट नहीं होती, सिर्फ किस में होती है, प्लस और माइनस में। क्योंकि अगर आप 1000 के साथ 0.01 को मल्टीप्लाई करिए तो वो तो उसको 10 बना देगा, 100 बना देगा। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एडिशन में। ओके, तो ये एडिशन में हमने इसको नेग्लेक्ट किया और ये कितना हो गया, x3, ये e की वैल्यू आई। अगर हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ऊपर और नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करिए, 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई a इंटू लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी को अब मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई a लैम्डा, 2 पाई a लैम्डा क्यों, ये है ना 2 पाई a लैम्डा इज क्यू, टोटल चार्ज। तो इसे अब हम E को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये देखिए, ये कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, एज इफ द होल चार्ज Q इज एज ए पॉइंट। और जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो ये रिंग हमको कैसा दिखता है, पॉइंट जैसे दिखता है, इसलिए ये फॉर्मूला भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई बात, ठीक है। सो एट ए लार्ज डिस्टेंस ए रिंग एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। और क्लास 11th में शुरू में आपने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी है, इफ द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज देन वी कैन इवन टेक ए ट्रेन एज ए पॉइंट चार्ज, ये चीज है। अच्छा, अब दूसरा केस, इफ x is very small compared to a, very small compared to a, that means let p be very close to center। अब बताइए, अब हाँ ये हमारा फॉर्मूला है, हाँ ये लिखा हुआ है, वेरी क्लोज टू सेंटर। किसको नेग्लेक्ट करना है, x को। x को क्या मान लेना है, 0। इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल तो ये पूरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। इफ x इज 0 तो उसके मल्टीप्लिकेशन से पूरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर
center of charged ring is 0. ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशंस हो गई. अब इसको कॉम्प्लिकेटेड करके या इसके पार्ट करके छोटे छोटे हिस्से करके एग्जाम में पूछा जाता है. इस साल भी पूछा गया था 12th के एग्जाम में, और हर साल इसका कोई ना कोई तरीका पूछा जा सकता है. जेई में भी इसके आते हैं. जो आपने ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखे, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो ये मेथड हो गया. ये हमने निकाला क्या करके, डी क्यू का फॉर्मूला लगा के, कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा के, क्यू अपॉन आर स्क्वायर के मेथड से. अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि गॉस थ्योरम लगा के हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं. एंड यू विल फाइंड कि गॉस थ्योरम वाला मेथड ज़्यादा आसान है, उसमें इतनी कैलकुलेशन इंटीग्रेशन नहीं लगते हैं. अगर आपको लग रहा है कि ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम लोग जो और बाकी चीज़ें निकालेंगे, आप देखिए जो हम गॉस थ्योरम से निकालेंगे कि एक स्फीयर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, स्फीयर के अंदर कितना होता है. एक बहुत बड़ी शीट है, उस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, लाइन नहीं, टोटल शीट, इधर से चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है. ये सिचुएशन एक के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड होते जाती है. शीट बहुत बड़ी होती है, स्फीयर ऐसा होता है, एक जगह से ज्यादा डिस्टेंस है, एक जगह से कम डिस्टेंस है. स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. और गॉस थ्योरम, गॉस का मेथड एक ऐसा मेथड है कि आपके पास कैसा भी चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आसानी से निकलता है. एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि एग्जाम का कोई भी पेपर उसके बिना बनता नहीं. तो इसलिए दैट एप्लीकेशंस आर वेरी गुड, और वो हमको रिमेंबर करने हैं. सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. टुडे वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, एंड दैट फॉर्म इज ए स्ट्रेट लाइन. देयर इज ए स्ट्रेट कंडक्टर, वी हैव गिवन चार्ज टू इट. Here is the straight conductor, we have given charge to it, and we want to find out electric field at this point. Now this point here, it may be anywhere. This point has got a perpendicular distance equal to r. Now what we know is the formula or the relation or the electric field due to a point charge. Coulomb has told us that electric field due to a point charge is a constant of the medium charge divided by r square. This is the electric field due to a point charge. Okay, but this is for the point charge and it has got a direction. Here this charge is at this location and this will have an electric field in this direction. This charge is at this location, this will have an electric field in this direction. Their distance are different, so the electric field magnitude will also be different. Now different magnitude, different directions, how do we calculate it? That simple formula will not be here because we have to add up different electric fields and find out a resultant for it, and that resultant will be the electric field. So that is why we cannot apply a straight formula. If we have given it the charge q, this distance is r, then this formula is not applicable. You understand why it is not applicable? Different r, different angle, different directions. Then how we will find out electric field? In our knowledge we have only one formula, that is for the point charge. So our method will be to find out or to divide this complete charge into point charges. See the steps. First steps,
divide it into different point charges, take electric field due to one point charge, and then integrate the electric field for the total distribution. This method will be applied whatever is the distribution of charge. Okay. So how to apply that? First, we change our terms a little bit. Q, we are using the charge on a point. Q may be the total charge given to this, but for this we take a different unit, which we will call charge per unit length. And we give it a notation lambda. That means every unit length has got charge lambda. The total length is L, so L multiplied by lambda will be total charge Q. Okay. If lambda is the charge on a particular length, lambda is the charge on unit length. And if our length is very small length, dl, here our length is very small length, dl, then it will carry certain charge. How much will be that charge? That charge is dq. Now, how much is this charge dq? So we have a relation that charge dq is dl multiplied by lambda, or dq is equal to lambda dl. This is the very small charge at this point. We have taken dl so small that it appears to be a point. Why we take dl? So that we are allowed to use the formula made for a point charge. So we take it dl. Now this dl is at a particular distance from here. Let us say this distance as r, and this distance, perpendicular distance, this we take as capital R. Okay. Now this distance is r for the dl, and across the dl we take, there are, yes, whether we take it from this side or we take it from this side, both the distances are very close to each other. We can say both are almost r. Now this is dl, this is very small. Just for calculation's sake I have taken it this much. Now where is this point P located? This P may be here, this P may be here, this P may be here. How to define it? So we define it with respect to ends of this conductor, ends of the conductor. From this end it makes a certain angle, let's call phi 1, and from this end it makes a certain angle, let's call this angle from here as phi 2. So from this perpendicular there is an elevation of phi 1 on this side, positive side, and phi 2 is depression on the other end, that is minus phi 2. The magnitude is phi 2, direction is minus. Okay. If we take P here, then the value of phi 1 when phi 2 will change. If we take P here, that phi 1 and phi 2, phi 1 and phi 2 will change. That means we can specify P at a particular location, and if I say P is such that phi 1 is equal to 20 degree and phi 2 is equal to 40 degree, then the location of P is a fixed location. There cannot be a second location for 20 degree and 40 degree. Similarly, for any given phi 1, phi 2, P will have a single location. So the P here we have taken is such a way that it has an elevation of phi 1 and depression of phi 2 only. Okay, so now let's write this thing. These are the given situation, and we have to find out electric field at this location. I will write what is given, what we have thought. P is a point
with two ends of charge conductor, and the distance, what type of distance? Normal distance is r. Okay. Let's take a small element dl. Carrying charge dq. Then dq is equal to lambda into dl. Okay. This dl, let it make a small angle here, and this angle is d phi. R, this r is making angle here, this angle is phi. It's a variable angle. When r is here, phi is different, r is here, phi is different, 0, and it goes on increasing. So when r goes like this, phi keeps on changing. What does not change? The extreme limits, that is phi 1 and phi 2. What does not change is the perpendicular distance r. So this r and this phi, they are variable. They keep on changing depending upon the position of dl. This is the situation here. So you understand which are the constant quantities and which are variable. Okay, now there is this dl, it has got charge dq at distance r. What will be the electric field made by this small element? dE is the electric field made by this element. Because we know electric field is in the line, you can choose this line, you can choose this line. dl is so small that there is no difference. So we take any one line. Okay. If this angle is phi, this angle is also phi. Now this dE has two components. One is in this direction. This is dE cos phi, and other is perpendicular to it. This is dE sin phi. Okay. Now, how much is the value of dE? Let's calculate. dE according to Coulomb's law. Here we taking help of Coulomb's law. And why do we want to take it? Because this, how we take it? Because this we assume to be a point charge. That was our purpose of taking it as very small dl. If this is a point charge dq, then dE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge, that is dq, and dq I put straight lambda dl upon r square. This. Now I want to convert it into the terms of r phi. How we can do it? 1 upon 4 pi epsilon naught lambda. It is a given quantity, so we use it lambda, no changes. dl, here dl. This dl I wish to convert in the terms of d phi, and you understand dl upon r is equal to d phi. I write it here. dl upon r is equal to d phi. So dl is equal to r into d phi. dl is equal to r into d phi. dl upon r, arc upon radius, is angle in radian, d phi, divided by r square. So this 1 r is cancelled, we get 1 upon r here. Now this r has certain relation with this r. This angle is phi, this is r, this is r. So cos phi is equal to r upon
small r. Cos phi is equal to base upon hypotenuse. Therefore, okay, 1 upon r is equal to, this leads to cos phi upon r is equal to 1 upon r. Now look here, 1 r is cancelled, and what we get here is lambda d phi upon 4 pi epsilon naught into r. Now this 1 upon r is equal to cos phi upon r. So now this we can write as lambda cos phi d phi upon r and 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught r. This is what? dE. Okay, this is the value of dE. Now, if this is the value of dE cos phi d phi upon r, then this component in this direction is dE cos phi, and this component is dE sin phi. Component along r is equal to dE cos phi. Okay, and this we can write as dE cos phi, and in place of dE we write this lambda cos phi d phi upon 4 pi epsilon naught r into cos phi, so we make it square, cos square phi d phi. Okay, this is component along r, this component. Okay, now what about this component? This component is, again, let's make it 1. Then component perpendicular to r is equal to dE sin phi, and this is equal to lambda cos phi sin phi d phi upon 4 pi epsilon naught r. Okay, this is vertical component or perpendicular component to r. Now, what will be the total electric field in this direction due to all these points? So answer is, if this is due to dl only, and we are changing dl from this point to this point, where d phi or the phi is changing from phi 1 to minus phi 2, then what will be the total electric field in horizontal direction? Net electric field in direction along r, in direction along r, E along r is equal to integration of this number 1 lambda cos square phi d phi upon 4 pi epsilon naught r.
this, and this integration is to be done from phi 1 to minus phi 2. Okay, now let's integrate it. So electrical parallel to R is equal to, lambda is a constant, 4 pi epsilon naught R, that is a constant. So we have to do the integration of cos square phi d phi. Cos square phi d phi, that integration is, now see it, this is, ये जो मैंने लिखा है parallel, this we will correct it along R. Along R की बजाय हम इसको directions ऐसे fix करते हैं. This is R and here we have this electric field. Electric field has got two components, one is this and one is this. इन दोनों के हमको नाम रखने हैं, nomenclature रखना है. Let us say this electric field is with respect to conductor, it is normal. This electric field is with respect to conductor, it is parallel. इसको E parallel बनाते हैं, इसको E normal बनाते हैं, that is with respect to conductor. तो फिर ये क्या हो जाएगा? E that is normal to conductor. इसका नाम E normal to conductor. ये. And this is equal to, here it is given to us, E which is here, the component along R. ये जो component along R है, इसको हम क्या लिखेंगे? E normal to the conductor and this is E parallel to the conductor. Because that is normal to R, so it is parallel to conductor. Okay, so this E normal is integration of this part. Now we do this integration. This is mathematics. So cos square phi d phi, this remains inside. The constants come out. This constants come out. Then cos square d phi we convert as cos 2 phi plus 1 upon 2. This upon 2 we take out. Again, what remain inside is cos 2 phi d phi and integration phi 1 to minus phi 2. Okay, if I write here cos phi, d phi is multiplied with 2 phi as well as with 1. Now integrated cos 2 phi d phi sin 2 phi upon 2 and d phi is integrated as phi. Now we take the values phi 1 minus phi 2. It is here. Okay. This 2 upon 2 does not make a difference. Only to create denominator of 2 I have put it here. Here this will be sin 2 phi. Cos 2 phi integration is sin 2 phi upon 2. Okay, sin 2 phi upon 2, this is integration. Now in the next step let's put the values. This half 1 upon 2 I have taken out. When I take it out, I write here 2 upon 2 and this 2 is taken out. Okay, when it comes out, okay, this becomes 1 upon 4. You can do it. After integration, this will have one denominator 2. Here I create one denominator 2 and these 2 comes out. Multiply with this become 1 upon 4. You can just practice it, it will come. Okay, then integration is done. Let us put the limits and this will be sin 2 phi 1 minus sin 2 minus phi 2 plus 2 and minus of minus phi 2 is plus phi 2. Okay, this 2 we have already taken out here. So now our expression is sin of minus 2 phi 2 is equal to minus sin phi 2 and minus plus, and this has become 2 phi 1 plus phi 2. This is the expression. Now this
E, which is, this is E, this is charge body. So we will give it a name, E perpendicular to charges. E perpendicular to charges. This is the expression for it. Now, this is a very complex expression. You won't find it in the books, but simply just because we started, we have finished it. It's not in NCERT syllabus, nor it is given in any book. Just as an exercise, you can do it. Now again, this component we have already done for this component. If you want to do for this component, that is E perpendicular to R, or we can write it E parallel to the conductor. Let's write it E parallel to conductor, and this E is perpendicular to conductor. So that we have done E perpendicular to conductor. Now we will do E parallel to conductor. This E parallel to conductor, we will take its dE component and integrate it. Its dE component was lambda cos phi 1 sin phi 1 cos phi sin phi d phi, and this is 4 pi epsilon naught and R. Okay, this is the one. Now, if we want, this was the value of D in place of D, we have placed this sin phi d phi. Okay. Now that is to be integrated for E. E is equal to constants out and integration of limits phi 1 to minus phi 2 sin phi cos phi d phi. Now sin phi cos phi, how much is that? 2 sin phi cos phi is equal to sin 2 phi. So this will be half of sin 2 phi d phi. So this is equal to, what is integration of sin 2 phi? Minus cos 2 phi by 2 divided by 2. Done? वो cos स्क्वायर हो गया था इसलिए प्रॉब्लम हुआ. Cos 2 phi plus 1 here again sin 2 phi. ठीक है. This is phi 1 minus phi 2 and here it is this has to be taken out again. So this will be 1/4 of lambda upon 4 pi epsilon naught r, and inside this will be minus को बाहर ले ले, नहीं ले, minus cos 2 phi 1 okay minus cos 2 minus phi 2. इसको जरा सॉल्व करिए. 1/4
1/4 pi epsilon lambda upon 4 pi epsilon naught r. Up. Now this is what? Minus cos 2 phi 1. ये कितना होगा? This is plus cos 2 phi 2 minus and minus will become plus cos 2 phi 2. Okay, so this will now become lambda upon 4 pi epsilon naught r into 1/4, and this is cos 2 phi 2 minus cos 2 phi 1. This is our expression for E, which is parallel to conductor. E which is parallel to conductor. Okay. So we got these two expressions. Now let's check it. If our point is, this point is at the center of it, so that phi 1 and phi 2 both are equal, then what will be the vertical component? I mean to say parallel to conductor component. This is parallel to conductor component. This phi 1 is equal to phi 2. Both are phi. So they cancel each other and this will become 0. So at the center, the component is 0. And we will have only this component. And how much will be component? That is here. So this component is 0. When we go up, then we find this component is there plus this component is also there. If we go up, what will happen to phi 1? Phi 1 decrease and phi 2 increase. That means cos phi 1 become larger. Cos phi 1 become larger, negative part become larger. That means the component will be downward. और दिख रहा है जब हम ऊपर जाएंगे तो ये सब चार्ज किधर है? नीचे. तो ये कंपोनेंट हमको किधर मिलेगा? नीचे. That satisfies our equation. जब आप इसको नीचे यहाँ पर लेकर आते हैं, तो उस समय phi 1 बड़ा हो जाएगा और phi 2 0 हो जाएगा. अगर phi 2 0 हो गया तो ये हो गया 1 और ये 90 हो गया तो ये हो गया 0. So our value will be this, and this value is positive. So all this will be in this direction. So this is how this formula is correct. We can test it here. And this component, of course, this we have already done. That will be according to that one. Okay, so this is because of straight line, and as I told you, this is not given in any book, nor it is given in NCERT book. So it's very unlikely that this thing is asked, but we know a method how to convert point charge to line charge and how to get electric field because of that.